Hello students, this video is for grade 1st. Let us start. We have 3 different parts in this sheet in which we will get to know about 3 different subjects which are of English, Maths and EVS. So let us start with our first subject, English. The questions are match the following opposite words. In this you have to match the verb with their opposite. Okay, opposite word से match करना. Like in मतलब अंदर, इसका opposite क्या होगा? Out मतलब बाहर. In, out. in, out, out. off, off. on, off, on. B-A-D, bad. Opposite word of bad, it is good. G-O-O-D, good. Bad, good. New, N-E-W, new. न्यू का ऑपोजिट वर्ड होगा ओल्ड. O-L-D, old. Understood? In this way you will match the opposite words. Okay, opposite words को आप एक दूसरे से मैच करेंगे. दोनों ही क्वेश्चंस के इंग्लिश की दोनों ही क्वेश्चंस में आपको मैचिंग करना है. ऑपोजिट वर्ड मीन उल्टे वर्ड्स, जो भी वर्ड दिया उसका उल्टा, उसका ऑपोजिट जो होगा उससे मैच करना है. लाइक क्लीन, डर्टी, स्टार्ट, ओवर, लॉस्ट, found, close, open, start, end, under, over, live, alive, death, long, short, dry, wet, new, new, old, bad, good, on, off, in, out. And also you will learn these opposite words with spelling. इन words को आप spelling के साथ learn भी करेंगे. Okay? Yeah. So let's move to our next question, which is of maths. Solve the sums of addition. In this you have to solve the addition. इसमें आपको क्या करना है? Addition form करना है. Okay? Addition को solve करना है. Addition जोड़ना है. 21 प्लस 9. 21 में 9 प्लस करेंगे कितना आएगा? काउंट. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So we will get 30. 21 plus 9 equals to 30. 34 plus 8, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. So 34 plus 8, it will be 42. 45 plus 5, 45 में 5 ऐड करें. 46, 47, 48, 49, 50, 50. So when we add 45 plus 5, we get 50. 28 plus 4, 29, 30, 31, 32. So we will get 32. 28 plus 4 will be 32. See the next question. In this also you have to do the addition. इसमें भी आपको addition ही perform करना है. But the difference is
In the previous question we have done with single digits. In the second question we will do with डबल डिजिट्स. पहले वाले में हमें डबल सिंगल डिजिट से करना था, अब इसमें हमें डबल डिजिट से करना है. ओके, ये सब कैरी वाले सम्स हो जाएंगे. 9 + 1 10, 2 + 3 + 1 कैरी 6, so it will be 6 0 60. 31 + 29 = 60. 32 + 38, 32 में 38 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2 + 8 10, 1 will be carry. 3 + 3 6 + 1 carry 7, so it will be 70. 70. 13 + 27, how much it will be? 13 में 27 करेंगे कितना आएगा? 40. Yes. 7 + 3 10, 2 + 1 3, 3 + 1 carry is 4, 40. 13 + 27, it will be 40. So in this way you will perform all the addition sums and complete these. Now see the last section, which is of EVS, Environmental Studies. List 5 ways in which animals are useful for us. Animals हमारे लिए किस तरीके से यूज़फुल हैं, कैसे हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ये आपको यहाँ पे इसके 5 तरीके लिखने हैं. किस तरीके से हेल्पफुल है वो हमारे लिए, कैसे हम एनिमल्स को यूज़ कर सकते हैं, कैसे उनसे हेल्प ले सकते हैं, वो कैसे हमारी हेल्प करेंगे, ये आपको यहाँ पर बताना है. कोई भी 5 तरीके यहाँ पे आपको लिखने हैं. लाइक एनिमल्स गिव्स अस फूड. एनिमल्स हमें फूड मिलता है, लाइक मिल्क, एग्स, ये सब हमें किससे मिलता है? एनिमल्स. सो दे हेल्प अस प्रोवाइडिंग फूड. दे हेल्प इन प्लाउइंग द फील्ड. ओके, हल जोतते हैं ना, हल तो कैसे जोतते हैं? हल बैलों को लगाकर जोता जाता है ना हल खेत में. सो दे हेल्प इन प्लाउइंग द फील्ड. खेतों को जोतने में भी हेल्प होती है उनसे. तो यही आपको राइट करना है कि किस तरीके से वो हमारे लिए यूजफुल है. अंडरस्टूड? या, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे's sheet. If you still have any kind of doubt related to any question, any topic, any subject, you can ask me. Thank you.